Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now, these two parts of the lesson, Sound of Music, gives us a very great message that whatever obstacles come in our way, whatever disability we are suffering, still we can reach to the top. Here we have got the example of Evelyn Glennie, who was just 8 years old when she lost her hearing power. And but this did not deter her determination. She became a famous percussionist. Percussionist means she could play 1,000 instruments. Imagine, she was deaf, she could not hear anything, but with sheer determination and hard work, she reached to the top. She could at the last she could play 1,000 instruments. This was her determination. We are going to go through the story. Now we come to page number 17. First paragraph. Rush hour. Crowds jostle for position on the underground train platform. Now rush hour, it was rush hour and the crowds jostle. Jostle means push roughly. Crowd भीड़ जो है एक दूसरे को push कर रही है for position on the underground train platform. People are pushing each other because they are standing on the underground train platform. जैसे metro platform होता है, लोग वहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हैं. A slight girl, slight means slender, पतली सी लड़की, looking younger than her 17 years, जो 17 से भी कम लग रही थी, was nervous. Nervous means she was looking very uneasy, yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. So she looked very uneasy, but she was very excited क्योंकि उसे जो है vibrations आती हुई, approaching means coming train की vibrations समझ आ रही थी. Vibration is slight shaking. वो दूर से ही पहचान पा रही थी कि ट्रेन आने वाली है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, because it was her first day at very famous Royal Academy of Music, which is in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. And naturally it was a great day for her. She was going to this famous academy, and secondly, not only that, it was very daunting. Daunting means very frightening for her. उसके लिए बड़ा डरावना भी इसलिए था क्योंकि she was a just teenager and who has come very fresh from a Scottish farm. She was girl from Scotland. Scottish farm means village की लड़की थी, गाँव की लड़की थी जो स्कॉटलैंड से आई थी और इतने बड़े म्यूजिक अकेडमी में जा रही थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. But this aspiring means person who wants to be a musician. But ये लड़की जो एक बहुत बड़ी musician बनना चाहती थी, she had a very great challenge. उसके सामने एक बहुत बड़ी obstacle था, challenge था, और वो ये था कि she was profoundly deaf. वो extremely deaf थी, बिल्कुल बहरी थी. Second para. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. But Evelyn Glennie का जो loss of hearing था, उसका जो ये बहरापन था, वो एकदम sudden नहीं था. It was very gradual, very slow. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. And her mother recognized her problem when she was 8 years old. They called her name and she didn't move. When her mother called her name, but she did not move, I suddenly realized she hadn't heard, said Isabel Glennie. Isabel Glennie is her mother. तो उसकी मदर ने एकदम रियलाइज़ किया कि she is not moving, there is something wrong. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Now Evelyn was very small, she was a teenager, and so she managed to conceal. Conceal means hide. और वो छुपाने में सक्सेसफुल हो गई अपनी deafness को from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents. But by the time she was 11, now see, 8 years she lost her hearing, 9, 10, 11. But when she was 11, her teachers, her marks gone bad. Deteriorated means they got less and less. कम होते चले गए उसके marks. And her headmistress, she requested her parents to take her to a specialist. Then she requested her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ कि उसकी जो hearing power है वो severely impaired है. Severely means बहुत ज़्यादा, seriously impaired. Impaired means weak है. And it was because of gradual nerve damage. कहीं ना कहीं उसकी कोई nerve damage हो गई है. And they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf.
and then doctors advised her that she should be sent to the school for the deaf, and without hearing aids she will not be successful. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है कि एकदम से ऐसा लगा सब कुछ black हो गया. There was no hope. But Evelyn was not going to give up. But Evelyn was made of something different stuff. She did not give up. उसने हार नहीं मानी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. And now she was determined. उसने पक्का इरादा किया. She had firm will. Determined means firm will to lead a normal life like any other children. And she pursued her interest in music. और उसने फॉलो, परस्यू मीन्स फॉलोड, एंड शी फॉलोड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वो चलाती रही अपना इंटरेस्ट. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने एक लड़की को देखा कभी xylophone. xylophone इज अ इंस्ट्रूमेंट विद रोज ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. एक जल तरंग जिसे हिंदी में कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है. उसने देखा एक लड़की को और उसने इरादा किया कि शी विल ऑल्सो प्ले. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसकी बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि शी विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट शी वॉज स्पॉटेड. स्पॉटेड मीन्स एक फेमस परकशनिस्ट थे. परकशनिस्ट होता है अ पर्सन हु प्लेज ड्रम और तबला एंड ऑल. ही वॉज वेरी फेमस एट द टाइम. ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसने देखा कि इस लड़की में बड़ी पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, ये तो बहुत कुछ कर सकती है. एंड ही बिगैन बाई ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. और उसने 2 ड्रम्स लिए, म्यूजिकल ड्रम्स, और उनको डिफरेंट नोट्स में सेट किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. उसने कहा देखो तुम अपने कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. तुम इसका जो म्यूजिक है वो किसी और तरह से अपनी बॉडी में सेंस करो. सेज एवलिन. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और एकदम से एवलिन ने रियलाइज़ किया कि वो जो सबसे बड़े वाला ड्रम था वो वेस्ट से ऊपर से वो उसको महसूस कर रही थी, और जो छोटा वाला ड्रम था उसको अपनी बॉडी के वेस्ट से नीचे महसूस कर रही थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. And very soon Evelyn, she discovered that she could sense certain notes. कुछ नोट्स थे, कुछ म्यूजिकल वाइब्रेशंस थी जो वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस कर सकती थी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations, and very nicely, very successfully she learned to open her mind and body to sounds and vibrations. different vibrations, different sounds को different parts of the body से समझ लिया करती थी. The rest was sheer determination and hard work, and the rest was now sheer determination. अब बचा क्या था? Strong determination. Sheer means strong determination, that is will, power and hard work. Now she has to do hard work. She never looked back from that point onwards. She toured the UK, that is United Kingdom, with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Then she went to United Kingdom with a youth orchestra. There was an orchestra party, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Now she auditioned. See what is auditioned? Audition means she gave a short performance that the director could decide whether she was good enough. Audition होता है जैसे मूवीज़ में होता है, पहले ऑडिशन देना पड़ता है, छोटा सा कोई रोल प्ले करना पड़ता है दिखाने के लिए कि whether you are able to do that work. So she auditioned for this great academy, that is Royal Academy of Music in London, and she got highest marks. She gradually moved from orchestral work to solo performances. अब वो group work जो कि orchestra में होता है, she came to solo performance, single performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. Now see, after just 3 years course, she was able to captured means she was able to get top awards. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know what you are doing, where you are going, you will get there. And Evelyn, she says that it is not a heroic achievement. She's so humble. She's not at all proud. वो कहती है कि if you work hard and know where you are going, अगर आपको पता है आप क्या करना चाहते हैं, then 100% you will get there. So she means to say that if you have willpower and you can work hard, then no work is difficult. You can reach there. And she got right to the top. World's most sought after multi-percussionist
with the mastery of some 1,000 instruments, and she was able to reach to the top. She became world's number one multi-percussionist. Multi-percussionist means at one time she could play so many instruments with a mastery of some 1,000 instruments. Imagine, she could play 1,000 instruments and hectic international schedule. And she had a hectic, very busy international schedule. She would tour many countries of the world and play orchestra or the instruments there. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Okay, then the narrator says that it is very intriguing. Intriguing means very fascinating. बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको देखकर कि एवलिन इज फंक्शनिंग, शी इज़ प्लेइंग म्यूजिक very effortlessly, बिना किसी परेशानी के, without hearing. She cannot hear and she is playing such beautiful music. In 1 hour or two, in our 2 hour discussion, she never missed a word. और कहते हैं 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. एंड शी सेड men with busy bushy beards give me trouble. वो कहती है जो लोगों के beards होती हैं, they give me trouble. Then she laughs. It is not just वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. वो कहती है सिर्फ मुझको लिप्स वॉच नहीं करने होते व्हेन शी इज़ प्लेइंग, शी हैज़ टू वॉच द होल फेस, स्पेशली द आइज़. इसीलिए जिनके बियर्ड होती है वो उनके इमोशंस को ढंग से पढ़ नहीं पाती फेस पे, बिकॉज शी प्लेज द म्यूजिक व्हेन शी रीड्स द फेस. She speaks flawlessly with a Scottish lilt, and she speaks flawlessly. Flawlessly means without any mistake, with a Scottish lilt. Lilt means way of speaking. उसका जो वे है, बोलने का जो अंदाज है वो स्कॉटिश है, because she is from Scotland. My speech is clear because I could hear till I was 11. वो कहती है मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है because मैं सुन सकती थी जब मैं 11 की थी. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But that is very exceptional when you come to know that she knew French also, she mastered Japanese also. इसको ये languages कैसे आ गई? Then and she's deaf. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो कहती है जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, it pours in. Pours in means कह रही मेरे हर बॉडी पार्ट से म्यूज़िक निकलता है. It comes out. It tingles in the skin. वो मेरे स्किन में मिलता है. I can find it. Tingles means causes a slight pricking or stinging sensation. कह रही एक सेंसेशन सा होता है मेरी स्किन में भी. My cheekbones, even in my hair. कहती हर जगह से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे म्यूजिक इज गोइंग इन मी. When she plays xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone बजाती है तो उसको लगता है जैसे जब वो उसमें स्टिक्स बजाती है कि जैसे उन स्टिक्स से उसके फिंगर टिप्स के अंदर म्यूज़िक पहुंच रहा है. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. And when she's kneeling, leaning means kneeling, झुकती है ड्रम्स बजाने के लिए, she can feel the resonances. Resonances means echo. जो ड्रम की जो echo है वो ऐसा लगता है उसकी बॉडी के अंदर जा रही है. On a wooden platform, she removes her shoes. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज़ रिमूव कर देती है, सो डैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. जिससे कि जो वाइब्रेशंस हैं उसके बेयर फीट से, नंगे पाँव से उसके लेग्स तक जा सके. द लास्ट पेज ऑफ दिस, दैट इज पेज नंबर 20. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. कह रहे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता. व्हेन एवलिन डिलाइट्स, डिलाइट्स मीन्स मेक्स हर ऑडियंस वेरी हैप्पी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Now, in 1991, she was presented with this prestigious. Prestigious means this famous award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और फेमस परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ज़रूर ले ली, पर उसको कुछ और भी दिया, उसको अलग से एक सेंस दी, सिक्स्थ सेंस दी, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी दे दी. व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो उसको महसूस करती है, फील करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग जो सुनकर भी उसको इतना अच्छा महसूस नहीं कर सकते जो सिर्फ उसे महसूस करके करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. दैट इज़ वाई वो जो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. And Evelyn confesses means she accepts. So accept करती है कि हाँ वो workaholic है. Now see, workaholic is a person who finds difficult to stop working. जो काम करने की आदत है, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, उसे कहते हैं workaholic. वो accept करती है कि हाँ कि मैं workaholic हूँ. I have just got to work.
often harder than classical musicians. कह रही मैंने क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और मुझे जो रिवॉर्ड्स मिले हैं वो भी इनॉर्मस हैं. इनॉर्मस मीन्स टू मैनी. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स जो वो करती है, कॉन्सर्ट्स और म्यूजिकल शोज जो वो करती है, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Now see, she is so charitable. In prisons और hospitals में वो free concerts करती है. She also gives high priority to classes for young musicians. और वो high priority पूरी importance देती है. Priority means importance देती है to the classes for young musicians. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. और एन रिचलिन जो कि बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की मेंबर हैं, वो कहती है कि शी इज़ अ ग्रेट, शाइनिंग मीन्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स स्टिमुलेशन, एक प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो उसको देख के लगते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकते. दे मीन्स डेफ चिल्ड्रन. एंड बाई लुकिंग एट हर दे कैन फील कि हाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. कहते हैं Evelyn Glennie had already accomplished. Accomplished means achieved. More than most people twice her age. उसकी एज से जो भी डबल लोग हैं वो भी इतना अचीव नहीं कर पाते जो एवलिन ने कर लिया. She has brought percussion to the front of the orchestra. और उसने इस percussion को, इस इंस्ट्रूमेंट को ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे जगह दिलाई है. And demonstrated that it can be very moving. And she demonstrated means she showed कि जो percussion है वो कितना मूविंग है, कितना इमोशनल है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. जो हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं किसी ना किसी तरह, उनके लिए वो एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, इफ़ एवलिन ग्लैनी कैन डू इट, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. एंड नॉट ओनली दिस, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस ह्यूज प्लेजर, huge delight, happiness to millions and millions of people. This beautiful story is written by Deborah Cowley. I hope the greatest message of this story is that if you have determination, if you work hard, no hurdle can stop you, no obstacle can stop you in doing anything.